Hello everyone, welcome to Science Express. Now let's start current affairs capsule, daily current affairs, August, day 12. As per the news, which of the following tiger reserve has installed a wind turbine to power real-time monitoring cameras and Wi-Fi connectivity within the forest? हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने अपने जंगल में रियल टाइम मॉनिटरिंग कैमरा और वाईफाई कनेक्टिविटी को बिजली देने के लिए विंड टर्बाइन स्थापित किया है? द आंसर इज पेरियार टाइगर रिजर्व. Periyar Tiger Reserve, it is located in Idukki district in Kerala, and recently Pench Tiger Reserve in Maharashtra installed artificial intelligence based fire detection camera, and name of the camera is Pantera. Okay, and it will detect forest fire immediately. So answer is Periyar Tiger Reserve. Recently French defense major company, that is Thales, has signed an agreement with which of the following companies to promote growth and innovation of drone ecosystem in India? हाल ही में फ्रेंच डिफेंस मेजर थेल्स ने भारत में ड्रोन इकोसिस्टम को विकसित और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द आंसर इज गरुड़ा एरोस्पेस. And it is a defense manufacturing company, and this company located in Chennai. Okay, so French defense major Thales has signed an agreement with Garuda Aerospace to promote growth and innovation of drone ecosystem in India. Recently, which state government has launched Upasthiti portal for health department employees? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए? द आंसर इज झारखंड. झारखंड सीएम हेमंत सोरेन लॉन्च द उपस्थिति पोर्टल टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ द हेल्थ वर्कर इन झारखंड. झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, एंड झारखंड कैपिटल इज रांची. As per the news, who among the following has been appointed as a MD of National Housing Bank? समाचार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे नेशनल हाउसिंग बैंक के MD के पद पर नियुक्त किया गया? द आंसर इज संजय शुक्ला. एंड संजय शुक्ला has been appointed as a MD of National Housing Bank. And National Housing Bank, it set up in 1988 under the National Housing Bank Act in 1987. It worked under the Ministry of Finance. And where is the headquarter of National Housing Bank? It's headquartered in New Delhi. And National Housing Bank, it wholly owned by RBI, that is Reserve Bank of India. Okay. As per the news, which of the following companies has received a letter of intent from Damodar Valley Corporation for setting up the 2 into 800 megawatt Kodarma Phase 2 thermal power station in Kodarma district of Jharkhand? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने झारखंड के कोडरमा जिले में 2 into 800 मेगावाट कोडरमा चरण 2 थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन से एक लेटर प्राप्त किया, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट? द आंसर इज वेल. ओके, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ वेल? सदाशिव मूर्ति कोप्पू. ओके, एंड डीवीसी हैज गिवन दिस प्रोजेक्ट टू वेल. एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेल? न्यू दिल्ली. ओके. Recently, which of the following organization has launched the Women Entrepreneurship Program to empower women entrepreneurs and stimulate economic growth? हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के और आर्थिक विकास के प्रोत्साहित करने के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज NSDC, that is National Skill Development Corporation. NSDC is headquartered in New Delhi, and who is the CEO
of NSDC, Ved Mani Tiwari. Okay, and they want to skill develop 25 lakh women in India. NSDC is a non-profit company. Okay, so answer is NSDC, National Skill Development Corporation. Recently, which state government has approved Logistic Policy 2024 to create 5 lakh job opportunities? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख नौकरियों को अवसर बनाने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी है? सो नेम ऑफ द स्टेट इज महाराष्ट्र. Okay, and Maharashtra government has approved Logistic Policy 2024. It aims to establish more than 200 logistics park complexes and terminals, which is expected to generate approximately 5 lakh new job opportunities. And who is the CM of Maharashtra? Eknath Shinde. And current governor CP Radhakrishnan. Okay, so Maharashtra government has approved Logistic Policy 2024 to create 5 lakh job opportunities. Recently, who has been conferred with Fiji's highest civilian award, that is Companion of the Order of Fiji? हाल ही में फिजी के उच्चतम नागरिक पुरस्कार दैट इज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? द आंसर इज आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. ड्यूरिंग हर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू फिजी फ्रॉम 5th August to 7th August 2024, President Draupadi Murmu was honored with Fiji's highest civilian award, that is Companion of the Order of Fiji, and Draupadi Murmu is the first Indian president to visit Fiji. Okay. Recently, which country won कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024? हाल ही में किस देश ने कावा वुमेन्स वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग को जीत लिया है इन 2024? द आंसर इज इंडिया. इंडिया ओन दी कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग एंड डिफीटिंग नेपाल 3-2 in Kathmandu. Okay, and India secured the championship in the final, and India took the gold medal, and Nepal secured the silver medal, and Iran settled for the bronze in this tournament. So India got the first position, and India is a championship of this volleyball nation league 2024. Okay, recently Indian Army has conducted strategic military exercise, that is पर्वत पहाड़, in which region? हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत पहाड़ एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था? द आंसर इज लद्दाख. ओके, एंड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द पर्वत पहाड़ एक्सरसाइज इन लद्दाख focusing on high altitude warfare, and this exercise highlight the operation in rugged terrain near the India-China border. Okay, and who is the governor of Ladakh? B.D. Mishra. B.D. Mishra. Okay, and recently a new governor appointed in Puducherry, name is K. Kailash Nathan. Okay, K. Kailash Nathan has been appointed as a new governor of Puducherry. Ladakh is a union territory of India. India has 28 states and 8 union territory. Okay. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.